पता शुरू late. Assalamu alaikum dear students of class 11. Today our topic is grammar auxiliaries or helping verbs. Yes, you know auxiliaries or helping verbs, they are usually main verbs for a variety of grammatical functions and meanings. They help the main verb to form tenses, negative. Yes, these helping auxiliaries, they are used as main verbs for a variety of grammatical functions and meanings. They help the main verb to form tenses, negatives, and interrogative sentences. Yes, dear students, these auxiliaries, they are divided into two groups. Yes, first group is primary auxiliaries, second is model auxiliaries. Yes, in primary there are three auxiliaries: do, have, and BEB. Yes, in model auxiliaries there are can, yes, may, yes, shall, yes, will, yes, their positive forms could, may, might, yes, shall, should, yes, will, it is past forward. Yes, there are also must, need, yes, ought, yes, dear. Yes, the students. Now, question arises: what is difference between auxiliaries and main verb? Yes, what is difference between auxiliaries and main verbs? Number one, these auxiliaries, they have negative forms. They have negative forms. For example, do, इसको बनेगा do not, can, इसका बनेगा cannot, yes, will, इसका बनेगा will not. Yes, dear students. Second is they are used to for auxiliaries or used to form questions. To form questions. इनको सवाल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. For example, did the bus arrive late? Yes, did the bus arrive late? Did the bus arrive late? Or does he come school daily? Does he come school daily? Yes, dear students. Third, these auxiliaries, they are used in question tags or tag questions. For example, you like apples. You
like apples? Don't you? Don't you? This don't you is a question. Likewise, Rashid came early. Rashid came early. Yes, it is question tab. Question will be didn't he? Yes. Yeah, difference between auxiliary and main verbs. Auxiliaries are used for or they have negative forms. For example, don't, do not, cannot, will not, won't, shall not, etc. etc. Auxiliaries they are used to form questions. For example, did the bus arrive late? Did the bus arrive late? He he comes to school daily. Does he come? Does he come to school daily? Does he come to school daily? Does he come to school daily? Yes. Auxiliaries are used to form take questions. You like apples, don't you? Rashid came early, didn't he? Remember that. For for positive sentences, question takers are negative, and for negative, question takers are positive. Yes, dear students. Now, let us discuss. Now, let us discuss these primary auxiliaries: do, have, and be. Yes, do. You know, do as an auxiliary verb has no meaning of its own. जो डू है एज एन ऑक्सिलरी इसका अपना कोई मानी नहीं है. हाँ, अब हमें सम यूजेस ऑफ डू और जो यूज है डू है इसके यूजेस क्या है. नंबर 1, टू फॉर्म क्वेश्चंस. To form questions in sentences that don't have a model or auxiliary verb. ये हम इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए उन सेंटेंसेस में जिनमें एक मॉडल या फैमिली ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है. He likes apples. Yes, dear students. तो इसका ऑफ क्वेश्चन बनाइए. Yes, you are right. Does he? यहाँ ऐड करो. Does he like apples? तो आपने क्या किया, आपने इसको आगे से does लगाया और जो like इसका s वो ड्रॉप हो गया. तो does he like apples? तो आपने ये क्वेश्चन बनाया. Likewise, you can frame a question from this sentence. She left last night. Yes. तो do की सेकंड फॉर्म लगेगी did she leave last night. Yes. did के साथ verb की फर्स्ट फॉर्म और बेसिक फॉर्म लगती है. Did she leave last night? Yes. अब इसका जो सेकंड यूज है, सेकंड यूज क्या है. सेकंड यूज हम इस्तेमाल करते हैं ये नेगेटिव. यहाँ ये क्वेश्चन बनाने के लिए इस्तेमाल इसका था. यहाँ अब नेगेटिव बनाने के लिए डू का इस्तेमाल किया जाता है. नेगेटिव्स बनाने के लिए जब वर्ब होगा मेन वर्ब होगा सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में. यस, आई रिपीट. टू फ्रेम नेगेटिव्स when the main verb is in the simple past or simple present. Simple past or simple present. Yes, dear students, let me give an example. She came
yes, she came. She came last night. She came last night. Yes, इसका नेगेटिव बनाओ. She, yes, she. नेगेटिव के लिए हम लगाएंगे डू की सेकंड फॉर्म didn't. She didn't. तो came जो इसकी फर्स्ट फॉर्म है come. She didn't come last night. She didn't come last night. Yes. He liked bananas. Yes. Make a negative of it. Yes. He didn't like bananas. I go to school daily. I go to school daily. इसका negative बनाओ. Oh yes, you are correct. I don't go to school daily. I don't go to school daily. I don't go to school daily. I go to school daily. इसका नेगेटिव बनाओ. तो इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा I don't go to school daily. Yes, अब इसका do का तीसरा इस्तेमाल in tag questions. In tag questions. In tag questions. Rashid likes oranges. Rashid likes oranges. Yes. इसका क्वेश्चन टैग बनाओ. इसका क्वेश्चन टैग बनाओ. यस, ये पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव. doesn't he. Yes, he doesn't like apples. तो इसका क्या बनेगा? does he liked ice cream. didn't he. Yes, इसका चौथा इस्तेमाल फोर्थ यूज किसका? डू का in imperative sentences. In imperative sentences. imperative sentences में इन imperative sentences में जो नेगेटिव होगा इन द नेगेटिव जो यानी प्रेजेंट में. शाबाश. For example, don't shut the door. Don't shut the door. Don't shut the door. Don't make noise. Don't make noise. Don't be silly. Yes, dear students. तो हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ये डू इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव के लिए. लेकिन प्रेजेंट में फॉर एग्जांपल शट द डोर, इसको हम नेगेटिव बनाएंगे डोंट शट द डोर. मेक नॉइज, डोंट मेक नॉइज. बी सिली, डोंट बी सिली. यस, इसका अब पांचवा इस्तेमाल यूज नंबर 5 किसका? डू का. इन सेंटेंस टू परsuade और मोटिवेट पीपल टू डू समथिंग. तो हम मोटिवेशन या परsuasion के लिए इस्तेमाल करते हैं. परsuasion, मोटिवेट या परsuade करने के लिए. मसलन ऑर्डिनरी सेंटेंस हम ले लेंगे और इसका फिर परsuasion के लिए एम्फेटिक बनाएंगे. Yes, dear students. For example, अब मैं कहूँगा come in as usual normally. लेकिन अगर emphasis के तौर पर कहूँगा तो मैं कहूँगा do come in. Do come in. तो यहाँ मैंने do इस्तेमाल किया. Yes, do come in. ऑर्डिनरी में कहूँगा have another cup of tea. लेकिन इसरार के तौर पर मोटिवेशन तौर पर मैं कहूँगा
Do have another cup of tea. Do have another cup of tea. Yes, these are five uses of do. Number one, I will repeat, to form question sentences that don't have a model or primary auxiliary. Then there is second, to frame negative. To frame negatives when the verb is in the simple present or simple past. Third is in tape questions. Fourth is in imperative sentences in the negative present. And fifth is for motivation in sentence to persuade or motivate people to do something. Yes, dear students. Now again do. Now ये do दोबारा ले लेंगे as a lexical verb. Yes, dear students, as a lexical यानी लघवी तौर, as a lexical verb, it means, it do means perform. इसका मतलब है अंजाम देना. हाँ, then it has all the forms of a main verb. All forms of main verb. Main verb की इसकी तमाम शक्लें बनती है. For example, first form is do or does. Second is did. Third is done. Then present participle is doing. Yes, dear students, do or does, did, done, doing. For example, let us try. Let us use do in various sentences. For example, he is doing MA. Second, he does his work. I did my work. Yes, he did his graduation. He has done well. These are all forms of main verb do. Next, dear students, now let us see what about have. Yes, now have के बारे में. Yes, have. Have जो है इसको एज ऑक्सिलरी हम क्या करते हैं, कंट्रैक्टेड फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं स्पोकन इंग्लिश में. फॉर एग्जाम्पल हैव को लिखते हैं इस तरह, हैव हैव इसकी दूसरी शक्ल है, इसको लिखते हैं कामा और एस. हैड इसको लिखते हैं कामा और डी. ये उसकी यानी हैव की मुख्तलिफ शक्ल है कंट्रैक्टेड फॉर्म में. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. फॉर एग्जाम्पल आई हैव तो हम लिखेंगे आई वी. ही हैज, ही कॉमा हैज, हैड, ही हैड, ही कॉमा डी. तो हैव जो है ये हैव, इसको हम इस्तेमाल करते हैं परफेक्टिव वर्ब फ्रेज. परफेक्टिव वर्ब फ्रेज बनाने के लिए, परफेक्टिव वर्ब फ्रेज बनाने के लिए. लेट अस सी हाउ. हम देखते हैं किस तरह. he has eaten. तो इसको हम कंट्रैक्टेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं. He has eaten. Yes, he had eaten.
यहाँ लिखेंगे he comma d eaten, he had eaten, we have eaten, तो इस तरह लिखेंगे we comma we have eaten. Yes, dear students, this is the use of have in perfective verb phrases. Yes, dear students. अब जो have, yes, have जो है as lexical verb, इसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं, इसकी डिफरेंट मीनिंग्स हैं। नंबर 1, हैव का मानी निकलता है पोजीशन, यानी ये किसी की प्रॉपर्टी बनती है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव ए बुक, या इसने एज मेन वर्ब के तौर काम किया। शी हैज ए डॉल। सेकंड, इसका यूज बनता है या दूसरा मानी निकलता है इसका एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग ए वंडरफुल डे, or we are having a wonderful day here or time here. Yes, तो यहाँ have की ing फॉर्म इस्तेमाल होगी, ये एज मेल वर्ब। तो ये आपकी एक्सपीरियंस है, यानी आज जो है, आज का दिन कैसे गुजारा हम लोगों ने। तीसरा, इसका मीनिंग निकलता है टेक। डू यू हैव टी इन द मॉर्निंग, फॉर एग्जाम्पल डू यू have tea in the morning. Here जो have है इसका मानी निकल गया टेक। क्या आज सुबह आपने चाय ले ली। फिर है इसका फोर्थ मीनिंग निकलता है कैरेक्टरिस्टिक, यानी किसी का एट्रीब्यूट, किसी की जो प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल ए हॉर्स हैज नो हॉर्न्स। यस, सेकंड सेंटेंस, ए कार हैज 4 टायर्स, and like. Yes, these are these. So have as a lexical verb, it has different meanings. First is position, second is experience, third is take, and fourth one is character. I have given you examples of all the 4 meanings. Now we have to discuss the primary auxiliary BEB. अब BEB के बारे में बात करते हैं। अब BEB की बात हो रही है। ये जो BEB, ये एक यूनिक वर्ब है इंग्लिश में। इसकी 8 फॉर्म्स हैं, ये 8 शक्लों में आता है। BEB ये यूनिक है, क्यों? इसकी 8 फॉर्म्स आती है, 8 फॉर्म्स। लेट मी शो यू हाउ। फर्स्ट फॉर्म बनती है एम, इज, और ये प्रेजेंट में बनती है उसकी। फिर पास्ट में बनता है वाज एंड वायर। फिर बनता है कंटिन्यूअस में बीइंग, और फिर बीइंग, और खुद जो BEB है।
यस, ये भी जो यूनिक वर्ब है इंग्लिश में, और शक्लें उसकी और फॉर्म्स है, एम, इज, और, वाज, वायर, बीन एंड खुद भी। अब देखना है ये जो वर्ब बी इसके क्या यूजेस हैं। तो हम लिखेंगे द वर्ब यस डियर स्टूडेंट्स, द वर्ब जो बी है, बी, इट इज यूज्ड टू फॉर्म प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस फॉर्म्स ऑफ वर्ब। आप टेंस जानते हैं, वहां जो कंटिन्यूअस फॉर्म्स ऑफ वर्ब है वो बनाने के लिए मैं आपको चंद मिसालें देता हूं। फॉर्म प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस फॉर्म्स ऑफ वर्ब, yes, for example, I am running, और I am running a race, तो ये रनिंग है, ये प्रेजेंट I am running, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन गया या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बन गया। she is dancing, likewise, they were sleeping, he was crying, we are eating, or it will be raining there, etc., etc. Now, BEB as lexical verb can mean, इसके क्या माना निकल सकते हैं। नंबर 1, to exist, yes. Number B, to take place. Number C, to occupy a place or position, to occupy a place or position. Yes, dear students, let me cite you some examples. Yes, to exist, मसलन शेक्सपियर ने कहा है to be or not to be, to be or not to be, to be or not to be. This is the cost. That is the question. That is the question. Or whatever is, it is right. Whatever is, it is right. It is right. तो ये यहाँ बी को किस मायने में लेता है, to exist, और it shows existence. Second, to take place. Second, to take place. For example, the funeral was a day later. The funeral was. Here what we have used the was form of be. Third is to occupy a place or position. For example, the book is किसकी फॉर्म है, बी की। The book is on the table. The boys are in the classroom. In the classroom or in the class. Third example, the students
were in the playground. Yes, dear students. Now you know BEB. It is a unique word of English. It has 8 forms. Am is or was were being been in be itself. The verb be it is used to make progressive continuous forms of verb. For example, I am running, she is dancing. Yes. Likewise, you can use in progressive or present progressive or past progressive or future progressive. Yes, dear students, as lexical verb, it has various meanings: to exist, to take place, to occupy a place or position. For example, to exist, whatever is, it is right. To take place, the funeral was a day later. To occupy a place, for example, the book is on the table. Now, what is your job at your home? Try exercise from your grammar textbook. Uh, that is prescribed by board. Yes, hope you have got me. Okay. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.